टीएमसी की पार्टी और कांग्रेस तीनों परिवारवादी पार्टियां हैं। आपका एक वोट भारत का भविष्य तय करने वाला वोट है। Hello, welcome. You're watching the Friday edition of This is Exclusive with me, Shavan Sen. Ladies and gentlemen, right from the day the war began in Israel, Republic TV has been on the ground getting you the latest reports. A turning point in the war between Israel and Hamas is today, when the exchange of hostages are likely to take place in the next 1 hour. Over the next couple of minutes, we'll take you through a ground report, giving you a sense of what does this really mean, the turning point, or is it somewhere down the line a step back taken by Israel under the pressure coming in from Western nations. All this and much more on this edition of This is Exclusive. But up first, these are the headlines we're tracking for you at this hour. 7 weeks after Israeli forces bombed Gaza, 4-day truce shouldered on a hostage swap between Israel and Hamas. New twist in Panauti face-off. Congress and BJP release posters trading barbs. Report on Mahua shows 3Nation login were multiple people involved in the payoff scandal. Top sources tell Republic business team Tesla could come to India as early as next year. Pakistan religious intolerance, Hindu temple in Pakistan's Sindh demolished. Uttarakhand operations in last stage, now 41 workers would come out tonight. India salutes 5 army personnel who laid down their lives fighting Pakistani terrorists in Rajouri. On 22nd of November, Israel and Hamas reached an agreement for 4-day ceasefire in the Gaza war. This diplomatic breakthrough, delayed by 24 hours, paves way for the release of numerous hostages held by terrorists and Palestinians detained in Israel. It also paves the way for a substantial influx of aid to the besieged territory. Hamas will be releasing 50 hostages at Rafah border. The ceasefire has sparked optimism about the eventual de-escalation of the conflict, which was triggered by Hamas's deadly incursion into Israel on 7th of October. Now, in its 7th week, the war has caused extensive destruction in Gaza, escalated violence in the occupied West Bank, and raised concerns about a broader conflict in the Middle East. In fact, Republic TV happens to be the only Indian channel currently at Rafah border. It is expected that in a short while from now, roughly at Indian time at 7:30, is when the release of hostages will take place. Many experts are saying that this could be the turning point. But how exactly would a beleaguered Benjamin Netanyahu really look at the situation? Remember the promises that have been made by Benjamin Netanyahu soon after the war began, saying that he is going to finish Hamas. Is this the first step towards de-escalation, something that several nations have been demanding? Take a look at this report and then we go across to our reporter on the ground getting you the latest details. 7 weeks after Israeli forces relentlessly bombed Gaza, a 4-day truce shouldered on hostage swap between Israel and Hamas has come into effect as the fighting comes to a halt. Trucks loaded with aid entered the Gaza Strip from Egypt through the Rafah crossing.
During this period, Gaza's ruling Hamas group pledged to free at least 50 of the about 240 hostages it and other militants took on October 7. Ambulances were seen moving at the Rafah crossing along the Egypt-Gaza border after a 4-day truce in the Israel-Hamas war took effect earlier in the day. From now, the hostages that will be released as part of the ceasefire deal will be reaching the Hazrim air base, which is one of the key air bases of the Israel. And the helicopters that you are witnessing are carrying out a trial run before they bring in the hostages from the Gaza Strip inside the Hazrim air base in the south of Israel. Important to mention that it will be the women and the children that will be released as part of the ceasefire agreement that has taken place and come into force at 7 in the morning at the Israel time, 4 in the evening, and the Indian Standard Time 7:30. The hostages will be released. The halt in fighting promised some relief for Gaza's 2.3 million people who have endured weeks of Israeli bombardment, as well as families in Israel fearful for the fate of loved ones taken captive during Hamas's October 7 attack that triggered the war. The Israeli bombardment, now in its 7th week, has killed more than 13,300 Palestinians. For Gaza's 2 million residents, the Rafah border crossing serves as a vital lifeline. Well, in fact, we'll just put out the details. In fact, Republic TV is the only Indian channel currently reporting from the very location where in a short while from now, roughly about in an hour or so, the hostages would be released. Many touting this as the game changer, the turning point in the war. First to you, Gursimran, if you could give us a sense of where you're reporting from, why is it so very significant? What is it that is expected in the next 1 hour? If you could just move around and perhaps show our viewers what's really happening behind you. See, Shovan, right now we are in the Hazrim air base, which has been one of the main points from where the targets were taken inside. That is, the air strikes were being carried out inside the Gaza Strip. And as we report from the Hazrim air base, I'll request Vijay Surendra Rawat to show you that this is the base where in an hour from now, it is expected that by 7:30 Indian Standard Time, the helicopters will be landing from the Gaza Strip. They will be bringing here the 13 hostages that will be released as part of the deal that has been jointly agreed by and mediated by the United States and the Qatar. We have seen that for the 48 days of the war, this place has been one of the epicenters of these airstrikes that have been carried out, because this is very close to the south, and from here the majority of the strikes were being carried out. As we spoke earlier today morning, before the start of the ceasefire agreement, there were almost a dozen strikes that were carried out, and all the fighter jets that carried out the airstrikes took off from this very Hazrim base. And also important to mention that the plan has been charted out, and that how things will move once the things goes out in the positive manner, and all the hostages, 13 hostages, will land here. There will be an initial medical checkup in the base only, and then the hostages, those who include children and the women, they will be segregated. The children will be moved to the central Israel. They will be moved by a helicopter only, and the women, they will be moved to a nearby hospital. A special medical facility has been set up there, and the women will be moved there. So this will follow in all 4 days from the Gaza Strip with the active assistance of the Red Cross. The hostages will be brought here, and from here they will be sent, the children to the central Israel and the women to the nearby hospital. And as the deal will progress, they will say that this will intensify. There are high possibilities that there might be some more air bases that will be made active in the coming days, but for now, at least for 3 to 4 days, the initial days of the hostage exchange deal, there will be brought here only, and then from here they will be sent to the different hospitals. Now coming to the operations that have been seized, the IDF says that they have seized the operation, they have paused the operation, the specific term they have used, but they say that they are ready for any eventuality just in case there is an attempt by the terrorists of Hamas, because today morning when the ceasefire began, we saw that within 15 minutes there was a breach of ceasefire from the Hamas side when they fired a series of barrage into the southern Israel that was thwarted by the Iron Dome system. Shavan. Simran, as I understand, a medical
base has been created from where you are reporting. Could you also give us a sense of what's really happening in terms of the arrangements that have been made? Because important to point out here is that for several weeks put together, they were taken as hostages. So it is expected that perhaps they were tortured and they would be in a critical condition once they are brought in. What's the arrangement like? See, Shavan, I'll request Rawatji to once again show you the visuals that here the helicopters, they will be landing at around 7:30 Indian Standard Time, and after that there has been a medical base that has been established here for the immediate checkup. Post that there will be a medical checkup in the hospitals when they will be shifted from here. But what we are being told that before they being shifted, after the primary medical checkup to the hospitals, there will be a cushioning, you can say, that will be done at least by 3 agencies. That will be the 504 unit of the Israel Defense Forces, that is a specialized unit, and also the Shin Bet and Mossad will be questioning them. So this is part of the protocol that has been set up because they want to make it very sure that there is no sabotage or any such angle that is involved, and that's why the decision was taken that at least 3 agencies will be carrying out their questioning before they are moved to the hospital, and this will be restricted to only those, not to the minors, but those who can, those who have seen what has happened and are in a position to describe this to the agencies. Shavan. Well, thank you very much, Gursimran, for getting us the latest details. We'll be tracking the story very closely as it's expected in the next 1.5 hours that the hostages are likely to be released. We were initially told that about 50 hostages would be released by Hamas. That would be in exchange of the prisoners who are in Israel. That exchange takes place. Once again, the big question really comes in that is this de-escalation against what Benjamin Netanyahu has been talking about, and how does this really pan out for Israel at this point in time? A story that we'll be tracking very closely. Let's shift focus now to the other story. Uttarakhand tunnel collapse. Remember, the rescue operation is still underway. 41 workers are still trapped. And we're now given to understand that the rescue operation has once again begun, but this was after it hit a snag on Thursday. Now, following the successful installation of 46.8 meter pipe that's inside the tunnel through the horizontal drilling, there were hopes for positive developments by Friday. Unfortunately, the rescue operation encountered a setback when the auger drilling machine experienced another malfunction on Thursday night. And Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami said that the rescue operation is now in its final stage, and assured that both central and state government agencies are working together and the safety of the workers remains their top priority. Remember, it's been a nightmare for all the family members who've been camping there. Some family members who've not been able to travel too. We'll try and connect with some of the family members to perhaps reach out to them and also put out the news that it's in the final stage. In fact, my colleague Akhil, who's going to join us from Uttarakhand, getting us a sense of what's really happening on the ground right now. Straight away, Akhil, to you with regards to what's the current situation like, and perhaps we would also like to reach out to the family members. Let's listen in to what the family members also have to say. One we have with us right now, family members also, but let me just give you the latest input what we have on the ground. So right now the auger machine has again started working. What has happened initially when the auger machine stopped working, it was November 22nd. So what happened on November 22nd, late night on November 22nd, when the 8th number pipe was supposed to be inserted, it faced a girdle inside that tunnel. So initially when the operation has begun on November 13 to November 16, 4 pipes were inserted inside the tunnel, and each pipe length was approximately 6 meters in length. So basically the 4 pipe has been inserted initially, and then 4 pipes again inserted till November 22nd. But there has been an obstacle, and the people over here have been eagerly waiting for their loved ones to come out. So we have been constantly talking with the laborers' family members, and they are very patiently and eagerly waiting for their loved ones to come out. I am joined by a few family members. Let me just speak to them and let everyone know how they are feeling right now and what's their reaction is. क्या नाम है आपका? जी रजनी टुडू, हम लोग बिहार से आए हैं।
आप कहाँ से आई हैं? बिहार से। अच्छा, जो अंदर फंसे हुए हैं वो कौन है आपके? मेरा पति, हस्बैंड। अच्छा, आपके हस्बैंड हैं, वो यहाँ कब से काम कर रहे हैं, उनके बारे में ज़रा डिटेल में बताएंगी? 2-2.5 साल से। ये जब से प्रोजेक्ट शुरू हुआ है तब से जुड़े हुए हैं उसके साथ? जी। अच्छा, तो वहाँ जो काम कर रहे हैं वो किस लेवल के, वहाँ पे सुपरवाइजर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, किस तरह का काम करते हैं, लेबर हैं, क्या करते हैं? ऑपरेटर, जेसीबी ऑपरेटर। जेसीबी ऑपरेट करते हैं। आपके घर में कौन कौन है? जो आपके हस्बैंड अंदर फंसे हुए हैं, आपके घर में बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं और मम्मी पापा। और 4 बच्चे हैं, वो उनकी एज कितनी होगी? बच्चों के बारे में थोड़ा अगर जरा बता पाए। बड़ी बच्ची को 16 साल और सबसे लास्ट छोटा वाला बाबू 3 साल। आप जब यहाँ आई हैं तो क्या बच्चों को बताकर आई हैं कि कहाँ जा रही हैं? बच्चों को पता है कि उनके पिता जो हैं वो इस तरह की इतनी भारी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, इस तरह की बात कुछ बता कर आई हैं? उनको आशा है, अंदेशा है इस बात का कुछ भी? जी, पता है। अच्छा, तो उनका क्या रिएक्शन था, क्या कहा उन्होंने? बच्चा को सब पता है। अच्छा, आप एक और फैमिली मेंबर्स हैं यहाँ पर, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपके यहाँ पर कौन फंसे हुए हैं इस टनल के अंदर में, जरा बताएंगे? जी, मेरा देवर फंसा हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पर तकरीबन 13 दिन हो गए, आज 13वां दिन है, तो क्या सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन दिया गया कि कब तक निकाल दिया जाएगा? क्योंकि हम जो सुन रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही है मीडिया के अंदर, उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि तकरीबन देर रात तक आज उन लोगों को सिक्योरली और सेफली निकाल लिया जाएगा। आप लोग जो है वो अंदर जाते हैं, आपको परिवारजनों को अलाउ है मिलना जाकर, तो आप लोगों की जब बात हुई तो उन्होंने क्या कहा आपसे? उससे कहा कि हम ठीक हैं, आप लोग बाहर में कैसे हैं, हम लोग का चिंता कर रहे हैं वो। आपकी बात आखिरी कब हुई थी? मेरा आज भी हुआ था फोन में। फोन पे बात? हाँ, घर में रूम में ही थे तो ओकी टोकी से वो बात किया था मेरा फोन में। क्या कहा उन्होंने? उन्हें कहा कि आप लोग कहाँ हैं, हम बात करना चाहते हैं, आप लोग यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं। अच्छा, तो आपको उनकी आवाज़ से क्या लगा? वो घबराए हुए थे, परेशान थे, या हौसला रखे हुए थे? ना, हौसला रखे हुए थे वो। Another laborers family member joined us here. क्या जरा मुझे आप बताएं, क्या नाम है आपका? देवेंद्र किसकू। अच्छा, यहाँ आपके कौन फंसे हुए हैं? भाई फंसे हुए हैं, उनके बारे में जरा बताएंगे। वो यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, तो आपकी बात हुई है उनसे पिछले 13 दिन के अंदर? आज रेस्क्यू ऑपरेशन का 13वां दिन है। हाँ, बीच में बात हुई थी। क्या कहा उन्होंने? उसने यही बोला कि हमसे यही पूछा कि कैसे हो भाई, तो वो बोला कि नहीं हम ठीक हैं भैया, आप लोग कैसे हैं। घर के बारे में भी वो पूछा था कि घर में सबको अच्छा से रखिएगा, सबको बोल दीजिएगा हम ठीक ठाक हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो इतने दिनों से बात हो रही है, तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि कब तक उन लोगों को निकाल दिया जाएगा? कुछ ऐसा आश्वासन दिया गया है आप लोगों को? जी, आज दिया गया है कि आज देर रात तक मतलब निकाल दिया जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपके घर में जो भाई फंसे हुए हैं आपके, उनके साथ घर में और कौन कौन है वहाँ पर? उसके साथ घर में मतलब मम्मी पापा हैं। मम्मी पापा ने क्या कहा? कोई संदेश दिया मम्मी पापा ने? मम्मी पापा संदेश यही कि वो दोनों वही यहाँ से रिपोर्ट हमेशा लेते रहते हैं, कैसे आज क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, यहाँ के काम के बारे में। अच्छा, तो आप यहाँ बिहार से आए हैं, आपके अलावा यहाँ बिहार के कितने मजदूर हैं जो कि यहाँ फंसे हुए हैं? यहाँ पर चार इस तरह का है, बताया गया है लिस्ट में, तो देखे हैं 4 है। Achha. So there you see, Shawan, the family members of the laborers are still concerned. They are still awaiting for that good news that all the 41 brothers are when they are supposed to come out. So everyone is eagerly waiting for that good news. So we have been talking to other family members. So some of them are from Jharkhand, some of them are from Bengal. As we all know that 15 family members, there are 41 family members total including. So out of that 41 family members, there are 15 people who are from Jharkhand. So Jharkhand is the one of the states from which the maximum number of victims are there inside, who are stuck inside that tunnel. So this is a big concern. But what we have been told by the officials that all the arrangements have been made, and they have been assured. When we spoke to them off the camera, also they simply told us that they have been assured by the central agencies, the state agencies, and all the teams who have been employed over here. All the teams who have been working over here have been saying that they will safely and securely rescue them very soon. But the timeline is is a very concerning question, because no one knows the nature of the rocks. So no one knows exactly the nature of the. Akhil, I'll just request you to stay on also while we stay with the family members who are currently camping at the very site where the rescue operation is still underway.
We'll also go across to another state where some of the family members were waiting with the bated breath to hear the good news that those who have been trapped were likely to come out sometime later this evening. Let me try and see if we can get across to a Republic Bangla reporter who's currently with one of the family members. We'll see if we can get across to him, also get a sense of what's really happening. Because remember, there has been a communication that has been essentially done. Let me just see if we can get across to him. If our Republic Bangla reporter who's there right now, ये बताइए कि आप जो फैमिली मेंबर्स हैं आपके साथ इस वक्त, क्या उनकी बातचीत हो पाई है? देखिए, यहाँ जो मैं जिस घर में खड़ा हूँ, ये जो बंगाल का जो वर्कर वहाँ फंसा हुआ है, वो सौभिक पाखीरा, उसके घर में मैं अभी खड़ा हुआ हूँ। उसके माता जी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है। जैसा कि वो लोग कह रही है कि कोई बातचीत अभी तक उनके साथ नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा नाराज़ है, थोड़ा सा डिप्रेशन में है वो लोग। तो बात करने की कोशिश करूँगा कि কথা কিছু হচ্ছে না। না না, কাল থেকে আর কোনো খবর নেই আমার কাছে। আমি কোনো খবর পাচ্ছি না, কাল যাতেই সকালের খবরই। কি খবর পেয়েছিলেন? শেষ খবর কিছুই পাইনি, আমি কিচ্ছু খবর পাচ্ছি নি। তার খবরে কোনে রোজই তো বলছে উদ্ধার হবে, আর কোনো খবরই আমার কাছে আসছে না। মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে, আমার ভালো লাগছে না। আপনারা যান, বাড়ি চলে যান। মানে একেবারে এখন জোর কদমে কাজ চলছে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত। তো কি মনে হচ্ছে যে কত তাড়াতাড়ি উদ্ধার করলে আপনারা খুশি হবেন? উদ্ধার তো যত তাড়াতাড়ি একটু ভালো করে হয় ততক্ষণ তো কত আর আমরা বলবো, তারা উদ্ধার করতে পারলে তবে তো। जैसे कि आप सुन पा रहे हो कि ये जो सौभिक पाखीरा है, उसकी जो माताजी है, उसका जो वो जो बताने की कोशिश कर रही हैं कि अभी तक उनकी बेटे से उसका बात नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं करवाया है। जैसे कि इसलिए थोड़ा सा डिप्रेस्ड है, चिंता में है वो लोग। परिवार के बाकी जो है बहुत चिंता में है। चिंता आছেন, প্রচন্ড চিন্তায় আছেন। চিন্তা আছে তো সবাইরই তো আছে, ঠাকুমারা বড় মায়েরা সবাইরই তো চিন্তা হচ্ছে না। খাওয়া দাওয়া তো উঠে যাচ্ছে পর করে। আজকে বলছে আসবে, আবার বলছে বেরোবে, আবার সবাই মুখ চেয়ে রয়েছে যে এবার বোধহয় বেরিয়ে পড়বে। আবার যখন এরকম হচ্ছে আবার সবার মন খারাপ হচ্ছে। जैसे कि वो बताने की कोशिश कर रही है कि बार बार उन्हें बताया जा रहा है कि अभी जो टनल से वहाँ से उसे रेस्क्यू कर लिया जाएगा, अभी रेस्क्यू कर लिया जाएगा, पर रेस्क्यू नहीं हो पा रहा है। बार बार टाइम एक्सटेंड हो रहा है, इसलिए चिंता दिन ब दिन चिंता बढ़ रहा है उन लोगों का। पर जब तक वो लोग सुरक्षित वापस नहीं आ जाते, तब तक ये जो टेंशन तनाव का माहौल है, ये माहौल चलता रहेगा। Well, thank you very much for getting us the latest report. Remember, some of the family members are essentially complaining about the fact that they've not been able to perhaps reach out to those who've been trapped inside. But remember, this is one big challenge that the central agencies have been facing. In fact, over the last 48 hours, what we have essentially witnessed is that there's been a regular briefing that is being done so that the family members are kept abreast about the rescue operation, hoping that some good news are likely to come in sometime later in the evening. Shifting focus now to a story coming in from China, yet another aspect of China where China is attempting to brush it under the carpet. This time, China, which is reeling from a devastating impact of the COVID-19 pandemic, faces a new threat. A mysterious pneumonia outbreak that has taken place that's sweeping through its educational institutions. Now, with echoes of the harrowing scenes of the early stages of the COVID-19 pandemic, this new development has triggered a surge in the hospital admissions in the country. Union Health Ministry stated that it is closely observing the health situation in its neighboring country. Additionally, the ministry has emphasized that the reported causes of avian influenza from China and clusters of respiratory illness that poses a low risk to India. The increase in respiratory illness among the children has come in the backdrop of the relaxation of COVID-19 restrictions and the resurgence of familiar pathogens such as influenza and pneumonia. Now, the latter is a prevalent bacterial infection that primarily affects the younger population. Take a look at this report, and we'll also play out the details coming in from the Union Health Ministry with regards to how India
is observing the situation. 4 years after COVID outbreak, China is facing another health threat. Children's hospitals and pediatrics unit of major hospitals in Beijing have been grappling with an influx of patients in recent weeks. This, as a respiratory infection season, also known as the mysterious pneumonia, arrived with a number of pathogens circulating. The average number of patients in the internal medicine department at Beijing's Children's Hospital topped 7,000 per day. Thereby exceeding the hospital's capacity, state-owned China National Radio said in an online article earlier this week. The symptoms of this mysterious pneumonia outbreak in China has symptoms of fever, cough, chills and difficulty in breathing. The World Health Organization says it made an official request to China for information about the potentially worrying spike in respiratory illnesses. The World Health Organization urged China to strictly follow the health guidelines to reduce the risk of respiratory illness. China, however, has reported no unusual pathogens in clusters of child pneumonia cases. With possibility of another COVID-like outbreak hitting China, the situation of the country remains on the edge. Bureau Report, Republic TV. In the global employability rankings by Times Higher Education UK, only the following 6 institutions from India are ranked amongst the top 230 in the world for having the most employable graduates: IIT Delhi, IISc Bangalore, IIT Bombay, IIM Ahmedabad, IIT Kharagpur and Amity University. For the first time that we are witnessing this scale of attacks very close to the armistice agreement line that are taking place. The multiple airstrikes that the Israel side is carrying out on the Hamas infrastructure moments before the implementation of on-ground ceasefire. The officers, the commanders on ground of the Israel Defense Forces are yet to be conveyed about the implementation of the decision that has been taken by the Netanyahu government, and now the attacks are intensifying with each passing minute. इस वक्त हम एक्टिव वॉर जोन में हैं और जिस जगह पर हम हैं यहाँ से हिजबुल्लाह को निशाना बनाया जा रहा है। ये आर्टिलरी जोन है जहाँ पर लगातार हमले हो रहे हैं। उस तरफ जिधर हिजबुल्लाह के आतंकवादी उन दूर पहाड़ियों पर बैठे हुए हैं और वहाँ से वो फायर करते हैं और उसका जवाब यहाँ से जो आर्टिलरी वेपन्स हैं, जो आर्टिलरीज हैं, वो जवाब देते हैं। ऐसे ही बहुत सारे आर्टिलरी वेपन्स यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं और हिजबुल्लाह पर सीधे हमले करते हैं। यहाँ पर आर्मी एक्टिवली लगातार हिजबुल्लाह पर हमले कर रही है। आईडीएफ कर रही थी उसके मुताबिक सुरंग मिली है और उसका वीडियो जारी किया गया है। 55 मीटर लंबी और 10 मीटर गहरी ये सुरंग मिली है अल-शिफा अस्पताल के कॉम्प्लेक्स से। We'll now share this video which shows the same hostage entering into the hospital with a gunman, terrorist inside the hospital. जो सस्पेक्ट किया गया था इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से वो यहाँ पर वाकई मिलता दिखाई दे रहा है। We are reporting from the armistice line of agreement and the intense small arms firing that is taking place as the day has begun. There was a briefing for the Israel media by the Prime Minister Benjamin Netanyahu in which he has made it amply clear that there is going to be no permanent ceasefire, but yes, there is a possibility of temporary ceasefire in exchange of the hostages. As we speak, there are loud bangs that are taking place inside the Gaza city, very close to the Jabalia refugee camp and also Al-Fakura, the UN school where the operations were carried out.
गाजा स्ट्रिप के बिल्कुल करीब से हम रिपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर गाजा स्ट्रिप को आप देख पा रहे हैं और अभी भी धमाका वहाँ तेज हुआ है। इस बीच ऐसा लग रहा है कि हुती विद्रोही और जो हिजबुल्लाह है मुस्लिम वर्ल्ड को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल ये बना हुआ है कि क्या युद्ध का दायरा अब तेजी से बढ़ता जा रहा है और क्या और देश भी युद्ध के मैदान में कूदने वाले, क्योंकि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। ऐसे मुस्लिम वर्ल्ड के सामने ये चुनौती बनी हुई है कि वो किसका पक्ष ले। इस वक्त हम आर्मिस्टिस लाइन पर मौजूद हैं और आप मेरे पीछे गाजा बॉर्डर पर लगातार तेज होती बम्बार्डमेंट की तस्वीरें सीधे देख पा रहे हैं। इस्माइल हानिये जो पूरी तरह से हेड करता है हमास को, उसके घर को देर रात जो स्ट्राइक्स हुई हैं उसमें नेस्तनाबूद कर दिया गया है। अल शिफा अस्पताल में भी ऑपरेशन जारी हैं। जो जानकारी IDF की तरफ से दी गई है उसमें बताया गया कि उसके अंदर तमाम जो हथियार है, एडवांस्ड वेपन्स हैं जिनका इस्तेमाल हमास इजराइल के खिलाफ करता है, वो वेपन्स बरामद किए गए हैं। हमास की तरफ से कहा गया कि 3 दिन का अगर सीज फायर किया जाता है तो कुछ बंधकों को छोड़ा जा सकता है। जो दावे IDF कर रही थी उसके मुताबिक सुरंग मिली है और उसका वीडियो जारी किया गया है। 55 मीटर लंबी और 10 मीटर गहरी ये सुरंग मिली है अल शिफा अस्पताल के कॉम्प्लेक्स से। We'll now share this video which shows the same hostage entering into the hospital with a gunman, terrorist inside the hospital. जो सस्पेक्ट किया गया था इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से वो यहाँ पर वाकई में Viewers, top headlines are tracking right now. Less than 24 hours to go for Rajasthan polling. Over 5 crore voters will decide the fate of candidates in the single-phase assembly polls tomorrow. Ahead of polling, Republic speaks to Union Minister Gajendra Shekhawat, who assures landslide victory of the BJP in Rajasthan. Taking a jibe on Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot, Gajendra Shekhawat says it's not BJP versus Congress battle, but Congress versus people this time. And leading the campaign, Amit Shah promises reservation for marginalized sections in Telangana if BJP comes to power. In Telangana, Defence Minister Rajnath Singh takes on KCR over dynasty politics. Republic speaks to Telangana Congress Chief Revant Reddy, who claims BRS, BJP and AIMIM are working together in this poll. Viewers, we are live and breaking. I'm Shivangi Shukla getting you the latest, and it's being seen as a semi-final before the Lok Sabha polls. All eyes on Rajasthan and Telangana now. Both states will go to polls soon. Amit Shah is campaigning in Hyderabad with a massive roadshow. Republic followed him on the campaign trail where Shah hit out at the BRS. Here is the exclusive interview. We have with us Union Home Minister Amit Shah on his roadshow in Hyderabad Kota. Good evening, sir. So this time around, we can see that there is massive response for the Bharatiya Janata Party in the roadshow. What exactly is the BJP's planning, and how is the BJP expecting the results to be? देखिए, इस बार मोदी जी के नेतृत्व में हम निश्चित रूप से यहाँ विजयी होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो उसका मुख्यमंत्री बैकवर्ड क्लास से होगा। हमने माड़ीगा वर्टिकल रिजर्वेशन के लिए भी कहा है। और जहां तक केसीआर की सरकार का सवाल है, बहुत बड़ा गुस्सा केसीआर की सरकार के खिलाफ है। अपीसमेंट पॉलिटिक्स, करप्शन और परिवारवाद, ये तीनों के कारण बहुत बड़ा गुस्सा है और तेलंगाना की जनता यहाँ परिवर्तन करने चाह रही है। कल से मोदी जी के दौरे हैं,
मुझे पूरा विश्वास है यहाँ हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। Sir, meanwhile, the BRS is saying that they are going to have a hat trick this time. No doubt, hat trick victory this time. There is no doubt in that. Do you think that is the reality in the situation? उनका एक क्लेम है, मगर मैं जनता में घुमा हूँ, चुनाव के पहले भी घुमा हूँ, बाद में भी घुमा हूँ, कहीं पर ये सरकार को रिपीट करने का मूड जनता का नहीं दिखाई पड़ा। Meanwhile, the Congress is saying that they will win 80 to 85 seats, which is a big majority number they are talking about. कोई सवाल ही नहीं है, कांग्रेस तो भाजपा और केसीआर से बहुत पीछे। Viewers, the big question is, who has the edge in Telangana? Well, the answer to that question will be revealed on December 3rd. But in the meanwhile, Republic has spoken to Telangana Congress Chief Rajasthan Reddy on the campaign trail. Heading out at KCR, the Telangana Congress president has exuded confidence in Congress victory. Here is what he said. Just few days left for the elections here in the state of Telangana. Well, we have with us the TPCC Chief Rajasthan Reddy with us on the election special. Sir, you have been campaigning extensively in the last few days. We have been seeing top leaders of the Congress party coming here. How's the mood like on the ground? How's the situation for the Congress? You know better than me. Why? Because you are seeing all these days how Congress party is campaigning, or otherwise how people are responding for Congress party 6 guarantees after Bharat Jodo Yatra. So this is the time to reach the target. Sir, we have been seeing how there has been a face-off between the Congress and the BRS. We see that you have been stating that if Congress wins less than 80 seats, you are ready for any punishment. But KCR says that Congress will not even get 20 seats. How do you look at the statement coming in from him? So he is like 1,000 rupees note. Now there is no value for 1,000 rupees note, you know, no? KCR is nothing but 1,000 rupees note. So we need not bother to KCR statement. Okay. Asaduddin Owaisi and KTR says you have come from the background of RSS. OSC calls you RSS Anna. How do you look at these statements coming in? I can see their frustration. Now they are in tremendous pressure. They are going to lose their power. That is why they are making allegations against me and my party. So we know who is what. How Asaduddin Owaisi working indirectly for Narendra Modi and BJP. And BRS, how they have supported all bills in Lok Sabha as well in Rajya Sabha. So, Triple Talaq, 370 article, Citizen Amendment Act, President election, Vice President election, all these years they have supported like anything to BJP. So, we need not to worry about their statements. Congress calls BRS, BJP and MIM one and the same. But BJP says keep Congress, BRS and MIM is one. How do you see this? Because there has been one side, BJP says that we cannot ally with BRS. So I can say BRS, BJP, MIM is NDA Kutami. Congress, CPI and Telangana Janasamti. They say that they will never go with NDA. So all these years, that is what you go through our track record. We never associated with BJP, whereas BRS continuously last 9 years they have voted BJP in Lok Sabha, in Rajya Sabha. So how come BJP is refusing to accept reality? So it's a only simple political game. We can understand what statement is giving BJP or Amit Shah ji. तो झूठ बोलने में वो लोग माहिर है, तो इसीलिए भारतीय जुमला पार्टी कहते हैं बीजेपी को। सर, कर्नाटका के बाद तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने 6 गारंटीज अनाउंस किए हैं और अब मैनिफेस्टो भी अनाउंस किया है, जहां पे कई सारे प्रॉमिसेस फुलफिल करने का वादा करता है कांग्रेस पार्टी। लेकिन बीजेपी जो है वो कहती है कि कर्नाटका मॉडल इज अ फेल्ड मॉडल, वेयर एज even the BRS says the same कि where has been जहाँ पे कर्नाटका में कहाँ पे बिजली ये लोगों ने पूरा
तरीके से दिया है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? एक तरफ बीजेपी है और एक तरफ बीआरएस है, जो दोनों कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट देके तो पता लगेगा कि बीआरएस बीजेपी एक ही है, क्योंकि जो आरोप बीजेपी लगा रहे वही बीआरएस लगवा रहा है। और दूसरी बात है कि फिर से यही कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी और बीआरएस एक है। तो दूसरी बात ये है कि बीआरएस इतना नाराज हो रहा है कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी जीतने के बाद, उतना दुखी क्यों? अगर कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी नहीं जीते तो कौन जीता था? बीजेपी। तो इन लोगों का सोच साफ है, तो वो इसीलिए नाराज है कर्नाटक में कांग्रेस जीत ले। उनका अलायंस पार्टनर बीजेपी नहीं जीता, कांग्रेस जीत लिए, इसीलिए बार बार कर्नाटक में कांग्रेस को वोट देकर जनता गलती की है, ऐसा गलती मत करो, यही है ना बीआरएस का भाषण। तो इसीलिए मैं साफ कह रहा हूँ, दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दिस इज एन पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, दे आर यूजिंग देयर ओन स्ट्रैटेजी थ्रू प्रशांत किशोर। सो लोगों को यहाँ पर जानकारी है क्यों अचानक बीजेपी गायब हो गए तेलंगाना से, किस लिए, क्यों उनके अध्यक्ष को बदल दिए। अध्यक्ष को बदल, वो ओबीसी था, ओबीसी अध्यक्ष को बदल दे के अभी बीजेपी ये कह रहा है कि हम ओबीसी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। कहाँ कैसे हो सकता है जब 100+ सीटों में उनका डिपॉजिट जब्त होने वाले हैं? देन हाउ कम दे आर गोइंग टू मेक ओबीसी? बीजेपी तो कहती है कि वो कॉन्फिडेंट है। अभी मैं वही, अभी 3 तारीख दिसंबर बहुत ज्यादा दूर नहीं है, देखते देखते 3 तारीख आ जाएंगे, देन पता लगेगा कि मीडिया को और बीजेपी को क्या होने वाला है तेलंगाना में। तो मतलब ओबीसी चीफ मिनिस्टर जो वादा करती है बीजेपी, वो आप बस एक पॉलिटिकल स्टंट की तरह देखते हैं? Definitely. Why? Because they have 10 state governments are there. So out of 10, they have only one OBC CM. Whereas Congress party, we have 4 chief minister. Out of 4, 3 are OBCs. Ashok Gehlot, Bhupesh Baghel ji, and Siddaramaiah. So they cannot compare with Congress party. So कांग्रेस पार्टी जो गारंटी देंगे बराबर गारंटी निभाने वाले हैं। तो केसीआर और बीआरएस पार्टी का क्या कहना है? क्योंकि केटीआर और बीआरएस पार्टी के लोग ये कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर केसीआर विल बी द हैट्रिक चीफ मिनिस्टर इन साउथ ऑफ इंडिया एंड बीआरएस विल कंटिन्यू फॉर द 3rd टर्म। सो के पाल भी वही बात कह रहा है कि हमारे सरकार बनाने वाले, इंटरनेशनल से हम बहुत सारे पैसे लाएंगे, के पाल मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो अभी केटीआर के स्टेटमेंट, के पाल के स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं है। केसीआर अगर 3rd टाइम चीफ मिनिस्टर का जो दावा करते हैं वो क्या? अभी उनका तो एक्सपायरी डेट खत्म हो चुके हैं। वो हर मेडिसिन को, हर आदमी कुछ एक्सपायरी डेट लेकर जन्म लेते हैं, उनका एक्सपायरी डेट खत्म हो गया, चुनाव वो हारने वाले हैं। सर, कांग्रेस पार्टी पे ये आरोप लगता है कि कर्नाटका से कांग्रेस पार्टी यहाँ पे पैसे मंगवा रही है और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, एंड कांग्रेस इज यूजिंग मनी पावर फ्रॉम कर्नाटका, दे आर कलेक्टिंग इलेक्शन टैक्स, इज व्हाट किशन रेड्डी सेज। तो ये मैं इसीलिए मैं साफ कह रहा हूँ, ये जो प्रोटेक्शन मनी बीजेपी को लेने का आदत है, इतना करप्शन चार्जेस है केसीआर एंड उनके परिवार के ऊपर, ना कहीं पर कुछ कार्रवाई नहीं की है। और पटचुम विवेक वेंकट स्वामी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ गए, 10 दिन में ईडी रेड हो गए, फेमा केस भी बुक हो गए, और हमारा पोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी टीआरएस छोड़कर कांग्रेस में आ गए, उनके ऊपर इनकम टैक्स रेड हो गए, क्रिमिनल के चार्जेस लगवाए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है आपको। जो लोग कांग्रेस पार्टी में है या कुछ लोग कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हो गए, उन्हीं लोगों के ऊपर आईटी रेड्स हो रहे, ईडी रेड्स हो रहे। मगर 10 साल से, या दिस द पॉलिटिकल वेंडेटा, 10 साल से केसीआर के खिलाफ मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, राजनाथ जी, हर केंद्र मंत्री कालेश्वरम को एटीएम बनाए, हाईली करप्टेड फैमिलीज, केसीआर फैमिली। हाँ भाई, आपके ने पावर है, क्यों इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करवा रहा है? तो इसका मतलब आप प्रोटेक्शन मनी लेकर छोड़ दे रहा है। Viewers, much more coming up on the side ahead of polling. Republic speaks to Union Minister Gajendra Shekhawat, who assures landslide victory of the BJP in Rajasthan.
इस वक्त हम एक्टिव वॉर जोन में हैं और जिस जगह पर हम हैं यहाँ से हिजबुल्लाह को निशाना बनाया जा रहा है। ये आर्टिलरी जोन है जहाँ पर लगातार हमले हो रहे हैं। उस तरफ जिधर हिजबुल्लाह के आतंकवादी उन दूर पहाड़ियों पर बैठे हुए हैं और वहाँ से वो फायर करते हैं और उसका जवाब यहाँ से जो आर्टिलरी वेपन्स हैं, जो आर्टिलरीज हैं, वो जवाब देते हैं। ऐसे ही बहुत सारे आर्टिलरी वेपन्स यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं और हिजबुल्लाह पर सीधे हमले करते हैं। यहाँ पर आर्मी एक्टिवली लगातार हिजबुल्लाह पर हमले कर रही है। For the first time that we are witnessing this scale of attacks very close to the armistice agreement line that are taking place. The multiple airstrikes that the Israel side is carrying out on the Hamas infrastructure moments before the implementation of on-ground ceasefire. The officers, the commanders on ground of the Israel Defense Forces are yet to be conveyed about the implementation of the decision that has been taken by the Netanyahu government, and now the attacks are intensifying with each passing minute. रिपब्लिक आपको जंग के मैदान से वो तस्वीरें दिखाने और बताने की कोशिश कर रहा है जो अब से पहले आपने कभी नहीं देखी थी। ये पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो चुका है। आर्मी की करीब 25,000 जो रिजर्व फोर्सेस हैं वो यहाँ पर हैं। गोलन हाइट्स का जो बॉर्डर है वो बमुश्किल 8 किलोमीटर है और इसीलिए ये एक्टिव वॉर फील्ड है। यहाँ पर बड़े हमले करने की तैयारी की जा रही है। We are reporting from the armistice line of agreement and the intense small arms firing that is taking place as the day has begun. There was a briefing for the Israel media by the Prime Minister Benjamin Netanyahu in which he has made it amply clear that there is going to be no permanent ceasefire, but yes, there is a possibility of temporary ceasefire in exchange of the hostages. As we speak, there are loud bangs that are taking place inside the Gaza city, very close to the Jabalia refugee camp and also Al-Fakura, the UN school where the operations were carried out. गाजा स्ट्रिप के बिल्कुल करीब से हम रिपोर्ट कर रहे हैं, यहां से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर। Viewers, welcome back. Rajasthan is all set to go to polls tomorrow, and it is going to be a closely contested battle. Making a big charge against Ashok Gehlot in poll-bound Rajasthan, Shah claimed Ashok Gehlot obstructed the stone mining that was needed for the Ram Mandir construction. And what we see right now is that the Congress has replied back on that charge. Listen in. गेहलोत जी ने राम मंदिर के लिए राजस्थान का पत्थर जा रहा था, उसको भी रोकने की हिमाकत करी है। जनवरी में वहां राम मंदिर का उद्घाटन होगा। आप कौन होते भाई बोलने का? क्या राम मंदिर के पुजारी है आप? क्या राम मंदिर के वहां महंत है आप? वहां के महंत लोग बोलने दो, साधु संत बोलने दो। आप क्यों है? आप पॉलिटिशियन है। आप देश को सुरक्षित रखना, कानून की व्यवस्था रखना, लोगों के पेट भरना, किसानों का दाम देना आपका काम है। तो इसीलिए मैं ये कहूंगा, मुख में राम, बगल में छुरी। In the global employability rankings by Times Higher Education UK, only the following 6 institutions from India are ranked amongst the top 230 in the world for having the most employable graduates. IIT Delhi, IISc Bangalore, IIT Bombay, IIM Ahmedabad, IIT Kharagpur and Amity University.
कांग्रेस ने राजस्थान को महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 बना दिया। आज हमारी पार्टी, हमारी सरकार आपके सामने जो काम किया उसके दम पर वोट मांग रहे हैं। तेलंगाना में ना कांग्रेस को फायदा होगा ना बीजेपी को फायदा होगा। ये तेलंगाना की आवाम इस बात का फैसला कर चुकी है। केसीआर, ओवैसी की पार्टी और कांग्रेस तीनों परिवारवादी पार्टियां हैं। आपका एक वोट भारत का भविष्य तय करने वाला वोट है। For the first time that we are witnessing this scale of attacks very close to the armistice agreement line that are taking place. The multiple airstrikes that the Israel side is carrying out on the Hamas infrastructure moments before the implementation of on-ground ceasefire. The officers, the commanders on ground of the Israel Defense Forces are yet to be conveyed about the implementation of the decision that has been taken by the Netanyahu government, and now the attacks are intensifying with each passing minute. इस वक्त हम एक्टिव वॉर जोन में हैं और जिस जगह पर हम हैं यहाँ से हिजबुल्लाह को निशाना बनाया जा रहा है। ये आर्टिलरी जोन है जहाँ पर लगातार हमले हो रहे हैं। उस तरफ जिधर हिजबुल्लाह के आतंकवादी उन दूर पहाड़ियों पर बैठे हुए हैं और वहाँ से वो फायर करते हैं और उसका जवाब यहाँ से जो आर्टिलरी वेपन्स हैं, जो आर्टिलरीज हैं, वो जवाब देते हैं। ऐसे ही बहुत सारे आर्टिलरी वेपन्स यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं और हिजबुल्लाह पर सीधे हमले करते हैं। यहाँ पर आर्मी एक्टिवली लगातार हिजबुल्लाह पर हमले कर रही है। आईडीएफ कर रही थी उसके मुताबिक सुरंग मिली है और उसका वीडियो जारी किया गया है। 55 मीटर लंबी और 10 मीटर गहरी ये सुरंग मिली है अल-शिफा अस्पताल के कॉम्प्लेक्स से। We'll now share this video which shows the same hostage entering into the hospital with a gunman, terrorist inside the hospital. जो सस्पेक्ट किया गया था इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से वो यहाँ पर वाकई मिलता दिखाई दे रहा है। We are reporting from the armistice line of agreement and the intense small arms firing that is taking place as the day has begun. There was a briefing for the Israel media by the Prime Minister Benjamin Netanyahu in which he has made it amply clear that there is going to be no permanent ceasefire, but yes, there is a possibility of temporary ceasefire in exchange of the hostages. As we speak, there are loud bangs that are taking place inside the Gaza city, very close to the Jabalia refugee camp and also Al-Fakura, the UN school where the operations were carried out. गाजा स्ट्रिप के बिल्कुल करीब से हम रिपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर गाजा स्ट्रिप को आप देख पा रहे हैं और अभी भी धमाका वहाँ तेज हुआ है। इस बीच ऐसा लग रहा है कि हुती विद्रोही और जो हिजबुल्लाह है मुस्लिम वर्ल्ड को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल ये बना हुआ है कि क्या युद्ध का दायरा अब तेजी से बढ़ता जा रहा है और क्या और देश भी युद्ध के मैदान में कूदने वाले, क्योंकि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। ऐसे मुस्लिम वर्ल्ड के सामने ये चुनौती बनी हुई है कि वो किसका पक्ष ले। कांग्रेस ने राजस्थान को महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 बना दिया। आज हमारी पार्टी, हमारी सरकार आपके सामने जो काम किया उसके दम पर वोट मांग रहे हैं। तेलंगाना में ना कांग्रेस को फायदा होगा ना बीजेपी को फायदा होगा। ये तेलंगाना की आवाम इस बात का फैसला कर चुकी है। केसीआर, ओवैसी की पार्टी और कांग्रेस तीनों परिवारवादी पार्टियां हैं। आपका एक वोट भारत का भविष्य तय करने वाला वोट है।
इस वक्त हम एक्टिव वॉर जोन में हैं और जिस जगह पर हम हैं यहाँ से हिजबुल्लाह को निशाना बनाया जा रहा है। ये आर्टिलरी जोन है जहाँ पर लगातार हमले हो रहे हैं। उस तरफ जिधर हिजबुल्लाह के आतंकवादी उन दूर पहाड़ियों पर बैठे हुए हैं और वहाँ से वो फायर करते हैं और उसका जवाब यहाँ से जो आर्टिलरी वेपन्स हैं, जो आर्टिलरीज हैं, वो जवाब देते हैं। ऐसे ही बहुत सारे आर्टिलरी वेपन्स यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं और हिजबुल्लाह पर सीधे हमले करते हैं। यहाँ पर आर्मी एक्टिवली लगातार हिजबुल्लाह पर हमले कर रही है। For the first time that we are witnessing this scale of attacks very close to the armistice agreement line that are taking place. The multiple airstrikes that the Israel side is carrying out on the Hamas infrastructure moments before the implementation of on-ground ceasefire. The officers, the commanders on ground of the Israel Defense Forces are yet to be conveyed about the implementation of the decision that has been taken by the Netanyahu government, and now the attacks are intensifying with each passing minute. रिपब्लिक आपको जंग के मैदान से वो तस्वीरें दिखाने और बताने की कोशिश कर रहा है जो अब से पहले आपने कभी नहीं देखी थी। ये पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो चुका है। आर्मी की करीब 25,000 जो रिजर्व फोर्सेज हैं वो यहाँ पर हैं। गोलन हाइट्स का जो बॉर्डर है वो बमुश्किल 8 किलोमीटर है और इसीलिए ये एक्टिव वॉर फील्ड है। यहाँ पर बड़े हमले करने की तैयारी की जा रही है। We are reporting from the armistice line of agreement and the intense small arms firing that is taking place as the day has begun. There was a briefing for the Israel media by the Prime Minister Benjamin Netanyahu in which he has made it amply clear that there is going to be no permanent ceasefire, but yes, there is a possibility of temporary ceasefire in exchange of the hostages. As we speak, there are loud bangs that are taking place inside the Gaza city, very close to the Jabalia refugee camp and also Al-Fakura, the UN school where the operations were carried out. कांग्रेस ने राजस्थान को महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 बना दिया है। आज हमारी पार्टी, हमारी सरकार आपके सामने जो काम किया उसके दम पर वोट मांग रहे हैं। तेलंगाना में ना कांग्रेस को फायदा होगा ना बीजेपी को फायदा होगा। ये तेलंगाना की आवाम इस बात का फैसला कर चुकी है। केसीआर, ओवैसी की पार्टी और कांग्रेस तीनों परिवारवादी पार्टियां हैं। आपका एक वोट भारत का भविष्य तय करने वाला वोट है। New turn in Panoti face-off. Congress and BJP release posters trading barbs. Report on Maua shows 3 nation login were multiple people involved in payoff scandal. Union Minister Gajendra Singh Shekhawat speaks to the Republic as Rajasthan gears up for polling. Top sources tell Republic business team Tesla could come to India as early as next year. Pakistan religious intolerance, Hindu temple in Pakistan, Sindh demolished. Uttarkashi operations in last stage now. 41 workers could come out tonight. India salutes 5 army personnel who laid down their lives fighting Pakistani terrorists in Rajouri.
Viewers, you're watching the biggest story tonight. On Thursday, Rajasthan witnessed the concluding campaign efforts from various political parties as a tranquil period commenced ahead of the elections scheduled for November 25th. With the power oscillating between the BJP and the Congress, the BJP aspires to unseat the Congress across all the 200 assembly seats, while the Congress aims to disrupt the long-standing revolving door trend in the state. The high decibel campaign preceding the upcoming Rajasthan Assembly elections concluded with the BJP voicing criticism regarding the state's law and order situation, while the Congress underscoring its commitment to welfare outreach. With all said and done, BJP has expressed there that it is certain to win the elections and that Rajasthan has made up their mind to throw out the Congress. Here is the exclusive interview. Are you winning these elections, sir? And if yes, why? 100%. It is now inevitable that BJP is coming into power. The Congress is going out. It is as true and as firm that tomorrow's sun is going to rise from the east. Now, Gajendra Singh Shekhawat, I do know you're a man of few words. It's very difficult to get you to talk. But tell me something, why do you believe it's the BJP winning this election? Now, Ashok Gehlot claims that he's very popular. There's a lot of anti-incumbencies admitted against his own MLAs. But he says, I am popular. There are a lot of welfare schemes that he says he's been working on ground, right from a Chiranjeevi to a lot more schemes. Do you think that could change the narrative? Could that give an edge to Ashok Gehlot? See, I am observing, and directly, indirectly, I am a part of Rajasthan's election for last more than 30 years. Since 1993, when I had given up my student leadership, I have completed my student leadership tenure as a president of the university. I am part of this electioneering in Rajasthan. Normally, whenever a government comes or a people's representative who gets elected in any of the position, maybe municipal corporator or sarpanch in Panchayati Raj or in different positions in Panchayati Raj, maybe MLA or MP, or he gets the chance to lead the government or work as a part of the government. Normally, chota-mota anti-incumbency sort of things remains there because you cannot satisfy 100%. No one can satisfy 100% people or electorals. But here is the absolutely different case where the people of Rajasthan are such angry and annoyed with present government that they have taken a commitment throw out the present government of the day out of the chair of the power. I can clearly observe that people of Rajasthan are contesting election. People are of Rajasthan because they feel they have been cheated. That's why they are committed to throw out the present government, the present political party out of the government. You essentially believe, sir, that how the battle has shaped up is Ashok Gehlot versus the people. It's the people in the state of Rajasthan who will be voting to ensure that Ashok Gehlot and all the kind of alleged corruption, the conversation about the Lal Diary, you believe these are real issues. Now, Lal Diary we all know, whether it's a Jain Hawala case to the Sara Birla diaries, nothing really stands in court. So, the allegation from the Congress's camp, Union Minister ji, is the fact that this has just been raked up so close to the elections to create a narrative. असली में वो कहते हैं उस लाल डायरी में कुछ है ही नहीं. See, in this tenure of 5 years of this government, the MLAs of Congress party have created new high benchmarks of corruption in their respective areas. People feel that they have been looted. People feel that they have been cheated. The corruption in the quantum of the corruption, what the local MLAs have done, in the postings, in the transfers, they were having hands and gloves with mafias, the Bazri mafias, the liquor mafias, the land mafias.
The people are so annoyed and angry with the MLAs of Congress party. So it is not only Ashok Gehlot versus the people. It is against the Congress public representatives and the people in their domain. Today, you just wrote down in your diary, when the results will be announced on 3rd of December, you will see and you will find yourself that how correct my words were. That majority of the MLAs of the ruling government are going to be defeated so badly. People are going to vote against them as if they are taking revenge of the corruption and the cheatings what the MLAs have done. Has clear, distinct proof of the corruption of Ashok Gehlot. I do remember, sir, the Prime Minister during one of his campaigns spoke of a quote-unquote Delhi Darbar vis-a-vis the Lal Diary. तो आपको लगता है कि जो लाल डायरी है इसका दिल्ली दरबार से भी कनेक्शन है? क्या कांग्रेस के हाई कमांड से इसका डायरेक्ट कनेक्शन है? निश्चित रूप से कनेक्शन है जी। उस लाल डायरी के पन्ने में लिखा हुआ है कि प्रियंका गांधी जी का सचिव जब पुलिस उसे ढूंढ रही थी तो छुपने के लिए यहाँ फरारी राजस्थान में काट रहा था और राजस्थान सरकार उसको सहयोग प्रदान कर रही थी। ये तो लाल डायरी में लिखा हुआ है, उसका जवाब देना चाहिए। लाल डायरी में लिखा हुआ है कि सरकार किस अकर्मण्यता के साथ काम करती है, उसके चलते हुए मुख्यमंत्री के पुत्र को मेंशन करके लिखा हुआ है कि ये पापा की सरकार कभी दोबारा इसीलिए रिपीट नहीं होती और अब की बार भी बुरी तरह से हारने वाली है। जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। एक और मसला जो कांग्रेस बार बार उठाती है, क्योंकि वो कहती है भाजपा उठाती है, वो है कन्हैया लाल का केस। अब उसमें अशोक गहलोत का ये आरोप है कि हमने तो 3 से 4 घंटे में आरोपियों को पकड़ लिया, उनको एनआईए को सौंप दिया गया है, तो हम पे जिम्मेदारी क्यों डाल रही है भाजपा इस पूरे मुद्दे को लेकर, अनलेस ध्रुवीकरण या पोलराइजेशन बीजेपी का अकेला मकसद है? पहली बात, उन लड़कों को 2 साहसी युवकों ने पकड़ करके पुलिस के हवाले किया। दूसरी बात, इस घटना के बाद के बजाय इसके पहले की कड़ियां देखिए। एक गरीब टेलर का काम करने वाला छोटा सा आदमी, अदना सा आदमी, उसको धमकियां मिलती है, टेलीफोन करके धमकी दी जाती है, वो पुलिस थाने में जाता है, जाकर के अपनी शिकायत दर्ज कराता है, पुलिस अनसुना कर देती है। दूसरी बार जाकर के फिर पुलिस में धमकी मिलने पर लिखित में शिकायत कराता है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। 2-4 इधर उधर के लोगों से सिफारिश कराने के बाद में पुलिस उसको बुलाती है, जिन टेलीफोन नंबर से धमकियां मिली होती है उनको बुलाती है और उस व्यक्ति को जो कंप्लेनेंट है, जो विक्टिम है, उस पर दबाव डाल करके उसी को माफ़ी मांगने के लिए कहती है कि इन जो धमकाने वाले लोग हैं इनसे तुम हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग लो, उससे लिखित में माफ़ी मंगाती है। फिर धमकियां आने का दौर नहीं थमता और उसको सर तन से जुदा कर दिया जाएगा, ये धमकियां दी जाती है। तब वो फिर पुलिस के पास जाकर के गुहार लगाता है तो उसको कहा जाता है कि तुम अपनी दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा दो। उसकी दुकान की रैकी होती है, वो जाकर के फिर पुलिस में कंप्लेन करता है तो कहते हैं कि तुम कोई आए तो हमको बता देना। दुकान 7 दिन तक बंद रखने के बाद गरीब आदमी जाकर के अपनी दुकान खोलता है। खोलने के बाद में उसको पता चलता है कि कल भी रैकी करके गए थे, फिर पुलिस को जाकर संपर्क करता है तो कहता है कि 5 मिनट में पुलिस पहुंच जाएगी, जब कोई तुम्हारे यहाँ आ जाए तब मुझे हमको सूचना कर देना। और उसके बाद में क्या होता है, जो कितना खौफनाक था, पूरा देश का दिल दहल गया था कि सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। अब बताइए कि जिम्मेदारी किसकी थी? गृह मंत्री जिनके अधीन राजस्थान की पुलिस काम कर रही थी, उनकी विफलता की जिम्मेदारी का ठीकरा वो दूसरों पर फोड़ के बच निकलना चाहते हैं। मैं ये कहूंगा और जिम्मेदारी के साथ में कहूंगा कि कन्हैया लाल टेलर की हत्या का अगर कोई पहला दोषी है वो अशोक गहलोत राजस्थान के गृह मंत्री होने के नाते हैं, जिनकी पुलिस उसे सुरक्षा नहीं दे पाई और पुलिस पर कार्रवाई करने के बजाय उन्होंने इस तरह के फौरी बयान देकर के इन दंगाइयों को संरक्षण देने और ऐसी मानसिकता को संरक्षण देने का काम किया। ये कन्हैया लाल टेलर को हत्या करने और सिर तन से जुदा करने वाले लोग का नारा देने वाले लोग और ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों को प्रश्रय क्यों मिलता है? क्योंकि राजस्थान में होने वाली हर ऐसी सांप्रदायिक घटना पर तुष्टीकरण की नीति के चलते हुए उनको संरक्षण दिया जाता है। जांच में संरक्षण होता है, गिरफ्तारी में संरक्षण होता है, मुकदमा दर्ज करने में संरक्षण होता है, मुआवजा देने में संरक्षण होता है। इस तुष्टीकरण के कारण से इस तरह की नौबत उपजती है, इनसे बच निकल नहीं सकती। इसके पाप के कालिक से जो है आप ऊपर से लेकर नीचे तक रंगे हुए हैं, आप कभी इससे बच नहीं पाएंगे। राजस्थान की जनता माफ नहीं करेगी।
देखिए, राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी के लिए न कभी चुनावी मुद्दा था और न होगा। राम भारत के लोगों के लिए आस्था का प्रतीक है, भारत के लोगों के राष्ट्रीय चिति, उनके जो है मान्यताओं का प्रतीक है। राम का चरित्र भारत के लोगों के लिए, समाज के लिए मर्यादा का विषय है। गांव में जब कोई लड़की शादी होकर के जाती है ना साहब, गरीब परिवार में, तो भी बुज़ुर्ग महिलाएं जो कहीं फॉर्मल एजुकेशन में नहीं गई, वो घूंघट उठा करके देखती हैं और कहती हैं कि सीता के समान होना। उस चरित्र को जिसको भारत का आम आदमी जिसको आदर्श मानता है, उसको चुनाव का मुद्दा बनाने का षड्यंत्र और पाप तो जो है कांग्रेस पार्टी ने किया था। और वहाँ से आगे बढ़ कर के हम देखें, सनातन के विषय पर चर्चा किसने प्रारंभ की? सनातन ताकतवर हो जाएगा अगर मोदी जीता, इसलिए मोदी को हराना है, ये बयान किसने दिया था? सनातन कोरोना के जैसा है, सनातन एड्स के जैसा है, सनातन डेंगू के जैसा है, सनातन मलेरिया के जैसा है। ये राग अलापना इंडी अलायंस के किन लोगों ने किया था? और उनके साथ संवेद स्वर में जो है ये राग कितने सारे लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने अलापा था? ये किसने प्रारंभ किया था? और अब क्योंकि जनता सामने से मुखर होकर के इन विषयों पर आपको निपटाने पे चली है, तब आप इसको भारतीय जनता पार्टी पर चिपकाने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि ये तो बेशर्मी और बेहयाई की हद हो गई है। We are into a break. On the other side, Pakistan's religious intolerance, Hindu temple in Pakistan's Sindh is demolished. Also, the Uttarakhand operations have entered their last stage. 41 workers could come out tonight. In the global employability rankings by Times Higher Education UK, only the following 6 institutions from India are ranked amongst the top 230 in the world for having the most employable graduates. IIT Delhi, IISc Bangalore, IIT Bombay, IIM Ahmedabad, IIT Kharagpur and Amity University. गाजा स्ट्रिप के बिल्कुल करीब से हम रिपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर गाजा स्ट्रिप को आप देख पा रहे हैं और अभी भी धमाका वहाँ तेज हुआ है। इस बीच ऐसा लग रहा है कि हुती विद्रोही और जो हिजबुल्ला है मुस्लिम वर्ल्ड को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल ये बना हुआ है कि क्या युद्ध का दायरा अब तेजी से बढ़ता जा रहा है और क्या और देश भी युद्ध के मैदान में कूदने वाले, क्योंकि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। ऐसे में मुस्लिम वर्ल्ड के सामने ये चुनौती बनी हुई है कि वो किसका पक्ष ले। मौजूद हैं और आप मेरे पीछे गाजा बॉर्डर पर लगातार तेज होती बम्बार्डमेंट की तस्वीरें सीधे देख पा रहे हैं। इस्माइल हानिये जो पूरी तरह से हेड करता है हमास को, उसके घर को देर रात जो स्ट्राइक्स हुई हैं उसमें नेस्तनाबूद कर दिया गया है। अल शिफा अस्पताल में भी ऑपरेशन जारी है। जो जानकारी IDF की तरफ से दी गई है उसमें बताया गया कि उसके अंदर तमाम जो हथियार है, एडवांस्ड वेपन्स हैं जिनका इस्तेमाल हमास इजराइल के खिलाफ करता है, वो वेपन्स बरामद किए गए हैं। हमास की तरफ से कहा गया कि 3 दिन का अगर सीज फायर किया जाता है तो कुछ बंधकों को छोड़ा जा सकता है। कांग्रेस ने राजस्थान को महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 बना दिया है। आज हमारी पार्टी, हमारी सरकार आपके सामने जो काम किया उसके दम पर वोट मांग रहे हैं। तेलंगाना में ना कांग्रेस को फायदा होगा ना बीजेपी को फायदा होगा। ये तेलंगाना की अवाम इस बात का फैसला कर चुकी है। केसीआर
ओवैसी की पार्टी और कांग्रेस तीनों परिवारवादी पार्टियां हैं। आपका एक वोट भारत का भविष्य तय करने वाला वोट है। For the first time that we are witnessing this scale of attacks very close to the armistice agreement line that are taking place. The multiple airstrikes that the Israel side is carrying out on the Hamas infrastructure moments before the implementation of on-ground ceasefire. The officers, the commanders on ground of the Israel Defense Forces are yet to be conveyed about the implementation of the decision that has been taken by the Netanyahu government, and now the attacks are intensifying with each passing minute. इस वक्त हम एक्टिव वॉर जोन में हैं और जिस जगह पर हम हैं यहाँ से हिजबुल्लाह को निशाना बनाया जा रहा है। ये आर्टिलरी जोन है जहाँ पर लगातार हमले हो रहे हैं। उस तरफ जिधर हिजबुल्लाह के आतंकवादी उन दूर पहाड़ियों पर बैठे हुए हैं और वहाँ से वो फायर करते हैं और उसका जवाब यहाँ से जो आर्टिलरी वेपन्स हैं, जो आर्टिलरीज हैं, वो जवाब देते हैं। ऐसे ही बहुत सारे आर्टिलरी वेपन्स यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं और हिजबुल्लाह पर सीधे हमले करते हैं। यहाँ पर आर्मी एक्टिवली लगातार हिजबुल्लाह पर हमले कर रही है। आईडीएफ कर रही थी उसके मुताबिक सुरंग मिली है और उसका वीडियो जारी किया गया है। 55 मीटर लंबी और 10 मीटर गहरी ये सुरंग मिली है अल-शिफा अस्पताल के कॉम्प्लेक्स से। We'll now share this video which shows the same hostage entering into the hospital with a gunman, terrorist inside the hospital. जो सस्पेक्ट किया गया था इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से वो यहाँ पर वाकई मिलता दिखाई दे रहा है। We are reporting from the armistice line of agreement and the intense small arms firing that is taking place as the day has begun. There was a briefing for the Israel media by the Prime Minister Benjamin Netanyahu in which he has made it amply clear that there is going to be no permanent ceasefire, but yes, there is a possibility of temporary ceasefire in exchange of the Welcome back. A massive controversy has blown up now in the state of West Bengal, wherein an alleged video, TMC leader Ratna Biswas can be heard making a stunning claim. The leader says that they will get voter ID cards for Bangladeshis if voted to power. এটাকে আমরা আগামী দিনে মানে এগিয়ে নিয়ে যাব। আজকে সেই প্রতিজ্ঞাই করব যে আর 3 মাস পরেই আমাদের মানে লড়াই লড়তে হবে মানে লোকসভা নির্বাচন। আজকে মমতা ব্যানার্জি মানে অনেকেই হয়তো লাইভ দেখেছেন, উনি কিন্তু আজকে ঘোষণাই করেছেন 3 মাস মধ্যেই ইলেকশন ডিক্লেয়ার হবে। আর অভিজিৎ দা যেটা বললেন আমরা সবাই জানি ভোটার লিস্টের কাজ চলছে। এখানে অনেক মানে জাকিরদার নির্বাচনী এলাকায় অনেক বাংলাদেশি লোক এখানে বসবাস করেন। জাকিরদার লিঙ্কটা ভালো করতে পারে অভিজিৎদা বললেন, আমিও বলছি যদি লিঙ্কের কোনো সমস্যা হয় বাংলাদেশ থেকে যারা এসছে ভোটার লিস্টের নাম তোলার সমস্যা, জাকিরদা এই কাজটা ভালো করে দেবে। আপনারা সবাই যোগাযোগ করবেন এই অফিসে এসে। আর যারা নতুন ভোটার হবে বাচ্চা ছেলে মেয়েরা তারা তো তাদের বাবা মার লিঙ্ক দেখিয়েই করে নিতে পারবে। এই কাজটা অতি দ্রুত করবেন, কারণ আমরা চাই না একটা ভোটও বাইরে থাকুক। সবাই ভোট অধিকারের আওতায় আসুক, সবাই সক্রিয় হয়ে এই কাজটা করুক। জাকিরদার অফিস থেকে ভালোভাবেই হয়, তাও আমরা আরেকবার অনুরোধ করছি আপনাদেরকে। আর বেশি কিছু বলবো না, আমার প্রচন্ড খিদে পেয়েছে আর কেকটাও ভেঙে যাচ্ছে। যাই হোক, আজকের এই দিনে আমি দিদির সুস্বাস্থ্য কামনা করি, উনি দীর্ঘায়ু এবং মানে সুস্থভাবে আমাদের মধ্যে কাজ করুক, আমাদের পরিষেবা দিক, এই কামনা করে আমি আজকে বক্তব্য শেষ করছি। We also have our colleague Bhaskar joining us from the Republic Bangla newsroom live. And remember, Republic Bangla is a channel that's broken that entire story for us. Bhaskar,
You know, for viewers not very familiar, why this utterance by this TMC leader is so very important, why don't you put the story in context? You know, there has always been this concern, particularly by the centre and the BJP there in the opposition, of a lot of these Bangladeshi infiltrators who've actually moved into the country legally. And this is a neta who's normalizing perhaps that behavior and says, we'll get you also voter icons. Well, Dipti, just ahead of the Lok Sabha election, the correction in the voter list is going on. And during that period, TMC leader Ratna Biswas, what she said is very much important in the context of national security too. Because where she said it in Habra, which is very close to the international border between India and Bangladesh. And as per the BJP and other opposition parties, there are so many intruders entering from Bangladesh to West Bengal through this zone of West Bengal. And what Ratna Biswas said, what Ratna Biswas suggested to all those intruders, to all those Bangladeshis who came to West Bengal or may come to West Bengal through illegal process, that if they want a voter ID card, card which is very important as per the identity proof, they may contact another TMC leader Zakir, and they will help them to get a voter ID card of Indian government, although they are Bangladeshis. So this is a very big issue in respect of the Bengal politics and as well as the national security, because BJP and other opposition parties, they clearly claim that the Bengal government, they are not cooperating with the BSF or the central government for making a clear fencing all over the international border, which is in Bengal and also in some parts of Bangladesh. And also there has been a number of issues in Bengal that Bangladeshi intruders, they tried to enter West Bengal and BSF Jawans stopped them during their patrolling. And now the TMC leader Ratna Biswas, she claimed that they will support those Bangladeshis who will enter India in West Bengal, and they're willing to get a epic card, a voter card, which is also residential proof if they vote the ruling party, Trinamool Congress, or their alliance in this upcoming Lok Sabha poll. So this is a very, very, very big statement made by those TMC leaders, and they also, she also named a TMC leader Zakir, who will help them to get their voter card done. And now the main question is Trinamool Congress leaders, they are cooperating with those Bangladeshi intruders to get a residential proof, to get an identity card of Indian government. Are TMC leaders, they are making a clear way to make this things happening. And also where BSF Jawans, they are patrolling 24/7 all around this international border, while BSF Jawans and central government, they are trying to stop this kind of smuggling and other intrusions. The TMC party and their leaders, they are asking Bangladeshi intruders to contact them and get a voter card. So this is a big issue for national safety as well as for the Bengal politics, because BJP, they allege that Trinamool Congress is trying to get their votes done to Trinamool Congress leaders. They are relying upon these Bangladeshi voters on this border area. And now the Trinamool Congress leader, she apparently made the BJP's claim a justified one. Dipti. Okay. All right, you know, Bhaskar, it's a potent story. Let's see how that story develops from there. Whether that is the TMC's official position, the BJP already has responded to this. We'll track that story for the moment. Thank you.
इस वक्त हम आर्मिस्टिस लाइन पर मौजूद हैं और आप मेरे पीछे गाजा बॉर्डर पर लगातार तेज होती बम्बार्डमेंट की तस्वीरें सीधे देख पा रहे हैं। इस्माइल हानिये जो पूरी तरह से हेड करता है हमास को, उसके घर को देर रात जो स्ट्राइक्स हुई हैं उसमें नेस्तनाबूद कर दिया गया है। अल शिफा अस्पताल में भी ऑपरेशन जारी है। जो जानकारी IDF की तरफ से दी गई है उसमें बताया गया कि उसके अंदर तमाम जो हथियार हैं, एडवांस्ड वेपन्स हैं जिनका इस्तेमाल हमास इजराइल के खिलाफ करता है, वो वेपन्स बरामद किए गए हैं। हमास की तरफ से कहा गया कि 3 दिन का अगर सीज फायर किया जाता है तो कुछ बंधकों को छोड़ा जा सकता है। IDF कर रही थी उसके मुताबिक सुरंग मिली है और उसका वीडियो जारी किया गया है। 55 मीटर लंबी और 10 मीटर गहरी ये सुरंग मिली है अल शिफा अस्पताल के कॉम्प्लेक्स से। We'll now share this video which shows the same hostage entering into the hospital with a gunman, terrorist inside the hospital. जो सस्पेक्ट किया गया था इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से वो यहाँ पर वाकई मिलता दिखाई दे रहा है। रिपब्लिक आपको जंग के मैदान से वो तस्वीरें दिखाने और बताने की कोशिश कर रहा है जो अब से पहले आपने कभी नहीं देखी थी। ये पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो चुका है। आर्मी के करीब 25,000 जो रिजर्व फोर्सेस हैं वो यहाँ पर हैं। गोलन हाइट्स का जो बॉर्डर है वो बमुश्किल 8 किलोमीटर है और इसीलिए ये एक्टिव वॉर फील्ड है। यहाँ पर बड़े हमले करने की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस ने राजस्थान को महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 बना दिया। आज हमारी पार्टी, हमारी सरकार आपके सामने जो काम किया उसके दम पर वोट मांग रहे हैं। तेलंगाना में ना कांग्रेस को फायदा होगा ना बीजेपी को फायदा होगा। ये तेलंगाना की आवाम इस बात का फैसला कर चुकी है। केसीआर, ओवैसी की पार्टी और कांग्रेस तीनों परिवारवादी पार्टियां हैं। आपका एक वोट भारत का भविष्य तय करने वाला वोट है। इस वक्त हम एक्टिव वॉर जोन में हैं और जिस जगह पर हम हैं यहाँ से हिजबुल्लाह को निशाना बनाया जा रहा है। ये आर्टिलरी जोन है जहाँ पर लगातार हमले हो रहे हैं। उस तरफ जिधर हिजबुल्लाह के आतंकवादी उन दूर पहाड़ियों पर बैठे हुए हैं और वहाँ से वो फायर करते हैं और उसका जवाब यहाँ से जो आर्टिलरी वेपन्स हैं, जो आर्टिलरीज हैं, वो जवाब देते हैं। ऐसे ही बहुत सारे आर्टिलरी वेपन्स यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं और हिजबुल्लाह पर सीधे हमले करते हैं। यहाँ पर आर्मी एक्टिवली लगातार हिजबुल्लाह पर हमले कर रही है। For the first time that we are witnessing this scale of attacks very close to the armistice agreement line that are taking place. The multiple airstrikes that the Israel side is carrying out on the Hamas infrastructure moments before the implementation of on-ground ceasefire. The officers, the commanders on ground of the Israel Defense Forces are yet to be
Viewers, it's time for Superfast 50. I'm Shivangi Shukla. Let's get started. The political slugfest over Rahul Gandhi's Panoti Bob as the Prime Minister. Modi escalated into a poster war with the Congress, referring to the PM as Panoti-e-Azam, and the BJP hitting back, calling the Gandhi family the real Panoti of the country. After the Congress put out a poster on X in which Modi is being shown behind a curtain with the words Panoti-e-Azam written on it, hitting back at the Congress, BJP spokesperson Shehzad Poonawalla put out another poster with the names of Priyanka, Rahul, Sonia, Rajiv, Nehru, Robert and Indira written, and the term Panoti highlighted using the letters of the names of the Gandhi family members mentioned in the poster. Targeting the Congress and Rahul Gandhi, BJP leader Ravi Shankar Prasad said that the Congress is doing dirty politics. He said that Rahul Gandhi has forgotten the common courtesy. राहुल गांधी क्या सामान्य शिष्टाचार भी भूल गए हैं? क्या हो गया उनको? वो हिंदुस्तान की राजनीति में इसीलिए हैं कि वो एक पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे हैं, एक पूर्व प्रधानमंत्री के पोते हैं। तो प्रधानमंत्री के वंशावली में आने पर जो दावा करते हैं राजनीति करने का, वो प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे घटिया शब्दों का प्रयोग करेंगे, शर्मनाक शब्दों का प्रयोग करेंगे। Amid the ongoing cash for query allegations against TMC MP Mahua Moitra, sources revealed that her parliament login ID was not just accessed from Dubai but also from New Jersey, United States and Bengaluru. A day after West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee claimed that Trinamool Congress MP Mahua Moitra's likely expulsion from the Lok Sabha would only increase her popularity, BJP leader Nishikant Dubey slammed the TMC Supremo, alleging that people like Underworld Don Dawood Ibrahim are favourites of Banerjee. तरह के सांसद पसंद हैं तो उनको उनका सांसद मुबारक हो। और कांग्रेस और इंडी गठबंधन का इतिहास रहा है कि 2005 में जब पैसा लेके क्वेश्चन पूछने के चक्कर में जिस कांग्रेस पार्टी ने राजा रामपाल को बर्खास्त किया पार्लियामेंट से, लोकसभा से, उसी राजा रामपाल को 2009 में कांग्रेस ने टिकट दिया और उसको सांसद बनाकर लाया। तो ये इंडी गठबंधन का इतिहास रहा है। उनको भ्रष्टाचारी, उनको देशद्रोही, उनको दाऊद इब्राहिम जैसे लोग पसंद हैं। Top sources have told Republic Business Team that American multinational automotive company Tesla could come to India as early as next year. According to the sources, if import duties for Tesla vehicles are reduced to 15% for the first 2 years of operation, the company is willing to make investments up to $2 billion in building a factory in India. Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami said that the rescue operation to extricate 41 workers trapped in a portion of the Silkyara tunnel in Uttarkashi, which collapsed over a week ago, is in its final stage, adding that both the central and state government agencies are working together. After more than a week's effort to rescue the 41 workers trapped in a portion of the Silkyara tunnel in Uttarkashi, Uttarakhand Secretary said that there were some snags which resulted in the operation delay, but now the operation is underway. अवगत हैं कि जो रेस्क्यू काम चल रहा है, इसके अंदर कुछ हर्डल्स पहले आई थी, कुछ उसके बाद हर्डल्स हो रही हैं। ये काम चल रहा है, दिन रात लोग देख रहे हैं, तो लोगों को नॉलेज होना कि पता चल जाएगा आपके माध्यम से क्या मुसीबतें आ रही हैं, क्या मुसीबतें ओवरकम की गई हैं। In yet another series of human rights violation, authorities in Pakistan have reportedly targeted places of worship belonging to Hindus. Hinglaj Mata Mandir in Sindh province became a victim of this crackdown on religious minority as officials in the district cited a court order to justify the demolition of this Hindu temple in the city of Methi. The wreath-laying ceremony, senior Indian Army officers paid homage to 5 Army personnel who lost their lives during an encounter operation to flush out terrorists in the thickly forested terrain in the Rajouri district of Jammu and Kashmir. 2 AK-47 rifles, 10 magazines, ammunition and other materials were recovered from terrorists who were gunned down in an encounter with security forces. The encounter broke out between terrorists and a joint team of the Army and Jammu and Kashmir police in the area of Dharamsala in Jammu and Kashmir's Rajouri district. Speaking of the 6th India-Japan Indo-Pacific Forum, External Affairs Minister S. Jaishankar highlights the steadily broadening India-Japan partnership in recent years. Jaishankar termed these arrangements as critical in creating reliable systems.
As the sources said, Qatari court has accepted the appeal document on the sentencing of 8 former Indian naval personnel to death. The appeal will be reviewed thoroughly before finalizing the date for hearing the appeal.